तो वेल हे गाइस, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लूमिस मेथड से कैसे ड्रा करते हैं और इसे किस तरह से यूज़ करना है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि लूमिस मेथड को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो लूमिस मेथड से ड्रा करते वक्त तुम्हें सबसे पहले एक सर्कल ड्रा करना है और फिर उसके बाद उस सर्कल के बीच से एक लाइन खींचनी है और उसके बाद तुम्हें सर्कल के साइड से भी दो लाइनें खींचनी है, क्योंकि एनिमे फेसेस साइड से तो प्लेन होते हैं। और फिर जो तुमने सर्कल के मिड से जो लाइन लगाई थी उसके ऊपर और नीचे दो लाइनें लगानी हैं जो कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। और उसके बाद तुम्हें सर्कल के मिड से एक लाइन खींचनी है जो कि फेस की डायरेक्शन को शो करेगी। और सर्कल के बीच में जो तुमने तीन लाइनें लगाई थी उनके बीच में जितना डिस्टेंस होगा उतने ही डिस्टेंस में तुम्हें सर्कल के नीचे एक लाइन लगानी है जहाँ से चिन रहा होगा। तो तुम्हें इसके हेयर्स को सर्कल के टॉप वाली लाइन से और उसकी मिड वाली लाइन और उससे नीचे वाली लाइन के बीच में आइज को ड्रा करना। तुम्हें ये बेसिक सा स्ट्रक्चर काफ़ी लाइट दिख रहा होगा क्योंकि मैं पेंसिल को काफ़ी लाइट प्रेशर के साथ यूज़ कर रहा हूँ। अगर तुम भी कभी बेसिक सा स्ट्रक्चर ड्रा करो तो कोशिश करो कि पेंसिल को लाइट प्रेशर के साथ ही यूज़ करो, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक हो भी जाए तो वो ईजिली इरेज भी हो जाए। तो यहाँ पर मैं पहले इसके ईयर्स को ड्रा करूँगा और फिर मैं इसकी बाकी फेशियल डिटेल्स को ड्रा करूँगा। तो अब बारी है इसकी आइज़ की, सो लेट्स डू इट। तो तुम्हें इसकी आइज़ को सर्कल की मिड वाली लाइन और उससे नीचे वाली लाइन के दरमियान में ड्रा करना है और याद रहे कि तुम्हें इसे काफ़ी पेशेंटली ड्रा करना है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं वेजिटा के नाम पर ये क्या ड्रा कर रहा हूँ, सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड वेट। सो और फेस इज डन। तो अब बारी है इसकी बॉडी की। तो मैं बॉडी के लिए कोई गाइडलाइन ड्रा नहीं करूँगा, मैं बस थोड़ी बहुत लाइनें खींचूँगा और थोड़ी बहुत डिटेल्स ड्रा करूँगा। सो ओवर स्केच इज डन। तो अब इसकी इंकिंग से पहले मैं इसकी फेशियल डिटेल्स को थोड़ा सा ठीक करूँगा। So this is our final sketch. और जब भी तुम इंकिंग करो तो कोशिश करो कि इंकिंग उसके फेस के बजाय उसके बॉडी पार्ट या उसके हेयर से स्टार्ट करो। And these are the after inking results. तो अब मैं इसके हेयर्स को कलर करूँगा। तो इसके हेयर्स को कलर करने के लिए मैं अल्कोहल मार्कर्स का यूज़ करूँगा विद पेंसिल कलर्स। और मैं यहाँ पर काफ़ी थिन पेपर का यूज़ कर रहा हूँ, अराउंड 100 GSM, जिस पर
मार्कर कलर्स को यूज़ करना थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि वो पेपर को डैमेज कर देता है। तो अगर तुम भी कभी अल्कोहल मार्कर के साथ ड्राइंग करो तो मेक श्योर करो कि तुम थोड़े थिक पेपर का यूज़ करो, अराउंड 200 GSM। तो यहाँ इसकी स्किन को कलर करने के लिए मैं इन 3 कलर्स का यूज़ करूँगा। तो इसकी स्किन को कलरिंग करते वक्त पहले मैं इसके शैडो एरियाज़ को कलर करूँगा, जिस पर मैं ऑरेंज का ज़्यादा यूज़ करूँगा क्योंकि मैं वेजिटा को उसके ऑरा के साथ ड्रा कर रहा हूँ, तो उस टाइम पर उसकी स्किन ग्लो कर रही है। इसके शैडो पार्ट पर मैं ऑरेंज के साथ थोड़ा ब्राउन का यूज़ करूँगा और मैं उन दोनों को पीच से ब्लेंड करूँगा। और इसके लाइटर पार्ट पर भी मैं पहले ऑरेंज से हल्की शेड ऐड करूँगा और उसके ऊपर पीच को यूज़ करूँगा। तो यहाँ इसके क्लॉथ को कलर करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल बोर्ड मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं यहाँ पर काफ़ी थिन पेपर का यूज़ कर रहा हूँ, तो इस पर कलर को ब्लेंड करने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. तो इसके क्लोज के इस पार्ट के लिए मैं येलो, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन का यूज़ करूँगा। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask. तो यहाँ इसके ऑरा को ड्रा करने के लिए मैं पेंसिल कलर का यूज़ करूँगा विद अल्कोहल मार्कर्स, और मैं इसके ऑरा को ऐसा सिंपल ही रखूँगा, मैं इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल्स ऐड नहीं करूँगा। And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming. So this is the final results. तो तुम्हें ये ड्राइंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ अपना ऑनेस्ट रिव्यू देना और सच बताना कि तुम्हें ये ड्राइंग कैसी लगी। तब मैं तुम्हें मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।